हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को बताऊंगा मैं अबाउट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग दैट इज आल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो पार्ट 1 है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज व्हाट काइंड ऑफ मेथड इट इज। It is a one type of empirical method which is based on the physical properties of the subgrade soil। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is considered to be the highest quality construction in the group of blacktop pavement? In the blacktop pavement, bituminous concrete is considered as the highest quality. Next question, when the width of the car parking space and width of the streets are limited, जनरली प्रिफर्ड पार्किंग इस किस तरीके से रखा जाए, पार्किंग किया जाता है पैरेलल पार्किंग जब स्पेस कम होगा। नेक्स्ट, when the bituminous surface is done on already existing blacktop road or over existing cement concrete road, the type of treatment given is tack coat। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the penetration macadam construction the bitumen is sprayed after the aggregates are sprayed and compact। पहले एग्रीगेट्स को स्प्रे किया मतलब पूरा बिछाया जाता है, फिर कंपैक्ट किया जाता है, उसके बाद ही बिटुमिन को मतलब स्प्रे किया जाता है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रेन विच इज कंसिडर्ड पैरेलल टू रोड टू इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम द हिल स्लोप इज नोन एज कैच वाटर ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the function of an expansion joint in rigid pavement is to allow the free expansion. Its aim is only to allow the free expansion. Next question, select the correct statement. More the value of group index, less thickness of pavement will be required. More the value of CBR, greater thickness of pavement will be required. Maximum and minimum value of group index can be 0 and 20 and all of the above. The statement which is correct is only this one. Its value lies between 0 and 20. Next question, penetration test on bitumen is used for determining for what? It is used for determining the grade of the bitumen. Next question, in soil having same value of plasticity index, if liquid limit is increased then what will happen? If liquid limit is increased then its compressibility and permeability dry strength increases, compressibility, permeability and dry strength decreases, then its compressibility and permeability इंक्रीजेस बट ड्राई स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। लिक्विड लिमिट इंक्रीज होने का मतलब है पानी हम लोग ज़्यादा डाल रहे हैं, तो ज़्यादा डालने के बाद कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन ड्राई स्ट्रेंथ कम हो जाएगा एंड परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर एग्रीगेट सुइटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इज, मैक्सिमम लिमिट इज 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the critical combination of stress for corner regions in cement concrete road is, for corner regions it is load stress plus warping stresses. Next, in the highway construction rolling starts from, in the highway construction rolling starts from both the sides and proceeds to the center। center में कैम्बर मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most economical lighting layout which is suitable for narrow roads is, कौन सा type of lighting यूज किया जाता है? सिंगल साइडेड लाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the ideal shape of the transition curve is clothoid or simple spiral, but it is not cubic spiral. Next is, the full width of land acquired before finalizing a highway alignment is known as, that full width is known as right of the way।
Next question, tire pressure influences the total depth of pavement, quality of surface course, both the above. So here answer will be, it influences only the quality of surface course. Next, any ingredient on a road is said to be the exceptional gradient if that gradient is less than the minimum and more than the maximum. उसके बाद next question है, during the last phase of the reconnaissance, details of the grade line is recorded on 2-meter pole to indicate what? Direction of the proposed alignment, distance between the previous and forward pegs, relative elevation of pegs, all of the above. So इसका आंसर जो है ये हो जाएगी all of the above. Next question है, pick up the correct statement from the following. The correct statement will be all of the above. हर एक अलग अलग सीजन की ट्रैफिक के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 पॉइंट्स दे के रखा है ए बी सी 500 मीटर अपार्ट, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ए बी सी तीनों के बीच में डिस्टेंस है 500 मीटर, ठीक है, और इनका जो एलिवेशन है वो बढ़ रहा है. तो ये जो भी है ए पॉजिटिव ग्रेडियंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा. लेकिन बहुत बुक्स में आप लोगों को मिलेगा ए नेगेटिव ग्रेडियंट, लेकिन ये पॉजिटिव ग्रेडियंट, क्योंकि वो 500 से 505 510 बढ़ रहा है सीधा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. द करेक्ट स्टेटमेंट हियर विल बी ए बिटुमिन प्राइमर is a high viscosity or very high viscosity cutback, means it is used to mix with the bitumen to make the bitumen diluted. Next question, the minimum design speed of various type of highway in plain terrain is the same as the rolling speed of the, इसका आंसर जो है it will be same as that of the rolling speed of the rolling terrain. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, in hill roads the side drainages are provided only on the hillside of the road. ऑपोजिट साइड में रिटेनिंग वाल होते हैं तो उसमें प्रोवाइड किया नहीं जाता है. जैसे ये हिल है तो ड्रेन जो है यहाँ पे रिटेनिंग वाल होता है और ये जो वॉल है यहाँ पे ब्रेस्ट वाल होता है. तो ये जो कैच ड्रेन है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है रोड के, ठीक है. So it is provided only on the hillside of the road. Next question, selection of the routes of highway depends upon feasibility of attaining ruling gradient, avoidance of cutting hard road, minimum number of bridges, all of the above. Option will be all of the above. Next question is, maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane during 1 hour without creating unreasonable delay is known as the practical capacity of lane. This one is known as the practical capacity of lane. Next question is, a traffic rotary is justified where number of intersecting road is between 4 and 7. ट्रैफिक रोटरी वहीं पे हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पे रास्ते जो है वो बहुत ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, या बिटवीन 4 and 7, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम 4 है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. मीडियंस के बारे में कह रहा है कि मीडियंस कहाँ पे क्या क्या होगा. रूरल रोड में 5 मीटर मीडियन शुड बी मिनिमम विथ 3 मीटर होना चाहिए और ब्रिजेस में 1.5 मीटर. तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if aggregate impact value is 20 to 30% then it is classified as, किस तरीके का एग्रीगेट होगा अगर 20 to 30% इसका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है. that kind of aggregate is satisfactory for road surfacing, only satisfactory. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑन हाईवे इज बेस्ड ऑन दी,
ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटबैक डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द रोड बाउंड्री लाइन एंड द बिल्डिंग लाइन। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन रोड बाउंड्री लाइन एंड द बिल्डिंग लाइन इज कॉल्ड सेटबैक डिस्टेंस। RC2, MC2 and SC2, rapid curing, medium curing and slow curing, these are the various type of tar। तो इनका विस्कोसिटी क्या होगा? इनका विस्कोसिटी सब में 2 है, मतलब सेम विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट इंटरसेक्शन ऑफ रोड द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज कैरिड आउट टू ascertain the number of vehicles which is moving along straight, moving left, moving right, all of the above। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड थ्रू ए सेट ऑफ लेयर्स टू दी सबग्रेड, सबग्रेड जो कि लोअर मोस्ट लेवल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली एडप्टेड मेथड टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन ऑन रोड इज बाय pivoting the road surface about inner edge so that the outer edge is raised, so that the outer edge is raised। ये पूछा है in comparison to the inner edge, ठीक है। this one is inner and this one is outer। next question है when load is applied on concrete pavement it is applied on the edges so that the maximum stress is parallel to the edge of the slab। next question the fundamental factor in the selection of pavement type is कौन सा होगा? pavement को select करने के लिए जो main important factor is it is used for the selection, it depends upon the type of traffic and intensity of traffic, high traffic है कि low traffic है उसके ऊपर डिपेंड करता है। next question is the maximum speed of the vehicle on a curve of 100 meter radius is 52.44। its radius will be 52.44। next question is for the construction of the waterbound macadam road the correct sequence of operation after spreading coarse aggregate is first of all dry rolling, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग, देन वेट रोलिंग, देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फिलर। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ ए मल्टी लेन रोड ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड फ्रॉम बोथ साइड्स लेफ्ट एज वेल एज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द डिग्री ऑफ ए रोड फॉर 30 डिग्री कर्व 30 मीटर के लिए पूछ रहा है, इस इज 1719। next question the walls which are necessary on the hillside of the roadway where art has to be retained from slipping। अभी मैंने बताया था आपको हिलसाइड में जो वॉल प्रोवाइड किया जाता है उसका नाम है ब्रेस्ट वॉल, और बाकी ऑपोजिट साइड जहाँ पे गहराई होते हैं वहाँ पे रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द क्रॉस स्लोप ऑफ ए कंट्री इज ग्रेटर देन 60 द टेरेन इज क्लासिफाइड एज द रोलिंग टेरेन, माउंटेनस टेरेन, स्टीप टेरेन, प्लेन टेरेन। तो यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाएगी स्टीप टेरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन अ नंबर ऑफ रोड्स आर मीटिंग एट ए पॉइंट एंड ओनली वन ऑफ द रोड इज इम्पोर्टेंट एंड द suitable shape of the rotary is then the shape of the rotary will be tangent। Next question a gradient along which the vehicle does not require any tractive effort to maintain a specific speed आराम से जाएगा, so that gradient is known as the floating gradient। Next question in welded wire mesh the longitudinal wire is placed at 15 centimeter center to center। Next question is percentage of free carbon in bitumen is lesser than that in tar। tar में ज़्यादा होते हैं कार्बन कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन hill roads are seldom provided a camber। उसके बाद एक्चुअली सेल्डोम के मतलब सेल्डोम प्रोवाइडेड कैम्बर का मतलब है बहुत
कम यूज़ किया जाता है कैम्बर को हिल रोड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट एज रिकमेंडेड बाय आईआरसी। आईआरसी के हिसाब से फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो है डिज़ाइन किया जाता है एज पर कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a district road with a bituminous pavement has a horizontal curve of 1000 meter for a design speed of 75 kmph. The super elevation will be 1 in 40. Next question is tie burses in cement concrete pavements are at कौन सी कहाँ पे यूज़ किया जाता है टाई बर्स? These are provided at the longitudinal joints. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ आईआरसी ट्रैफिक वॉल्यूम इज कैरिड आउट फॉर रूरल रोड फॉर 7 days continuously during both harvesting and lean seasons. Next question is formation width of a hill road is the distance between the outer end of the side drain to the outer end of the parapet wall. बिल्कुल सही, out to out. Next question is the camber of shoulder in water-bound macadam is greater than the cross slope of the pavement or equal. No, it is equal होगा. The camber of shoulder in water-bound macadam is always equal to the cross slope of pavement. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the difference in gradient after super elevation and the initial alignment of road is known as such kind of difference is known as differential gradient. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी कैम्बर फॉर हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग हिल्स के लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे 2.5%. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है if C is the basic capacity velocity, so the formula C is equal to 1000 into B by S is applicable for this formula is applicable for the 2-lane roads but in one direction only. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है to prevent the movement of moisture from subgrade to the road pavement ऊपर तक an embankment about 0.6 meter to 1 meter higher than water table, the thickness of the cut-off layer of the coarse sand is कितना यूज़ किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगी none of this. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्ट इंटरसेम रेंज इन्वॉल्व्स एज डाइवर्जिंग टू द लेफ्ट साइड एंड मार्जिंग फ्रॉम राइट ना diverging to the right side and marging from left ना diverging to the right side and marging from right. बिल्कुल सही, both are right side दोनों ही right side होना होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज बेस्ड ऑन a compromise of pure theory and pure empirical formula. Next question is the total value of extra widening required at a horizontal curve on a 2-lane hill road of radius 42 for design speed different for vehicles of each hill base 6 is how much? Its value will be 1.089. Next question is which of the following represents hardest grade of bitumen? The hardest grade of bitumen will be 30 by 40. Next is the number of repetitions which the pavement thickness designed for a given wheel load should be able to support during the live pavement is 10 lakh. Next question is according to the recommendations of Nagpur conference, the width formation of an ideal national highway in hard cutting rock is 7.9 meter. Next question is setting out of lemniscate transition curve is done with polar deflection angle. It is done with the help of polar deflection angle. Next question is maximum daily traffic of bituminous pavement is 1500 tons per day. Next question is the headlight of vehicle should be such that its lower beam illuminates object at 30 meter. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द
gradient of trace cut for hilly roads are kept 10% to 20% easier than ruling gradients. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following represents as a carpet of sand bitumen mixed without coarse aggregate. Without coarse aggregate, it is mastic asphalt, sheet asphalt. So इसमें कह रहा है कि एक तो mastic asphalt, sheet asphalt, bituminous carpet and bituminous concrete. But here it is saying that मिक्स विदाउट कोर्स एग्रीगेट. तो विदाउट कोर्स एग्रीगेट इसका मतलब है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगी शीट एस्फाल्ट. नेक्स्ट, reinforcement in cement concrete slab of road pavement is placed in the form of welded wire mesh. Next question is maximum number of vehicles can be parked with 90-degree angle parking. Next question is on concrete road the camber generally provided is 1 in 60 to 1 in 72. Next question is if D is the economical design depth of a slab, the thickness of the cement concrete slab at interior is 0.85 times of D. इसके बाद next question is the ductility value of bitumen for suitability in the road construction should not be less than 30, 40, 50 and 60. Ductility value should not be less than कितना होगा? It should not be less than 50 सेंटीमीटर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the extra mechanical with this one, each value will be L square by the 2R. Next question is interior thickness of the concrete road slab for design wheel load of 6300 kg and permissible flexural stress 21 kg per centimeter square is कितना हो जाएगी thickness? Its thickness will be 25.5 centimeter. Next question is for rapid curing cutback the oil used is gasoline. Next question is the width of different road as recommended in Nagpur plan by the Indian Road Conference for hilly region is different for width will be different for different national highways. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है to prevent a head-on collision of vehicles traveling in opposite direction along 4-lane road, medians of wide area are provided. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the maximum thickness of expansion joint in rigid pavement. In rigid pavement में expansion joint जो है maximum thickness will be 25 mm. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है length of vehicle does not affect the width of the shoulder. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन is the type of curve generally provided on highway is critical curve, transition curve, vertical curve, all of the above. Next question is the thickness of the bituminous carpet varies from bituminous carpet thickness varies from 20 mm to 25 mm. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेडियंट रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग व्हीकल्स अलोंग द डाउन साइड इज माइनस ऑफ 9 kg पर टन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IRC रिकमेंडेशंस इज द एवरेज लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन इम्पोर्टेंट रोड कैरिंग फास्ट ट्रैफिक इज 30 lux. नेक्स्ट क्वेश्चन इज overtaking time required for a vehicle with design speed 50 kmph and overtaking acceleration 1.25 meter per second square to overtake a vehicle moving at a speed of 30 kmph is कितना होगा? This one will be तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगी 6.12 seconds. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the group index for soil whose liquid limit is 40%, plasticity index is 10 and percentage passing 75 micron IO shifts, its group index value will be 0. Next question is
For night travel, the length of the valley curve should be such that the headlight beam distance is same as the headlight का जो beam है वो same होना चाहिए stopping side distance की तरह. Next है the binder normally used in flexible pavement construction is bitumen. Next question is in retaining wall and breast wall weep holes provide किया जाता है पानी जाने के लिए. Those weep holes should be at a height of 100 centimeter vertical, 100 vertical, and center to center is 120 centimeter. So option number C. Next question is in highway construction on super elevated roads the rolling proceeds से super elevated मतलब hill roads के बारे में पूछ रहा है. It starts as from lower edge towards the upper edge. Next question is its answer will be G1 plus G2 divided by 200L into x square. Next question is reconnaissance is best done with the help of aerial photography survey. Next question is for the block cards its value will be 1 in 15. Next question is the group index value of subgrade is between 5 and 9, then the subgrade is treated as 5 and 9 के बीच में होगा 59, then its value will be poor. Next question is an executive engineer of road execute the work directly under the control of executive engineer के ऊपर है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ऑर्डर में काम करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिवॉल्विंग द व्हील ऑफ ए व्हीकल मोर देन इट्स सर्कम्फरेंशियल मूवमेंट इट्स नोन एज. इसको बोलेंगे हम लोग स्कीडिंग. सर्कम्फरेंशियल से ज़्यादा है तो इसको नाम होगा स्कीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुइटेबल सरफेसिंग मटेरियल फॉर ए ब्रिज डेक स्लैब इज फॉर ए ब्रिज डेक स्लैब इट द मटेरियल विल बी मेस्टिक एसफॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the velocity of the moving vehicle on a road is 24 km per hour, stopping side distance is 90 and average length of the vehicle is the basic capacity of the lane is 1000 vehicles per hour. Next question is if the radius of a compound curve and a reverse curve are respectively the same, the length of the common tangent of both the curves will be equal. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है. तो आप लोगों को मैंने टोटल 100 क्वेश्चंस बता दिया. ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी तरह इन क्वेश्चंस को याद करना है, बाय हार्ट करना है, रट्टा मारना है. ठीक है, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम्स में इतना कम समय होता है, आप अगर करने जाओगे तो आप लोगों का होगा नहीं. सिंपल सी बात है, रट्टा मारो और टिक करवाए, सोचना ही नहीं है कुछ भी. ठीक है, तो अगर आप लोगों को पसंद आया वीडियोस देन प्लीज़ like the video, and if you have not subscribed my channel please subscribe the channel and share as much as possible. And thanks for watching the video. Okay.